Hello and welcome to this second edition of Majhkali Mondays. And every Monday we are trying to invite one or the other very eminent personalities from this majestic locale of Ranikhet to listen to their experiences, how and why they came over here for a majestic mountain living. And today we have with us the power couple of Ranikhet, who is in romance with this Healing Himalayas, 5 decades and counting. We have with us C.S. Jain sir and Veena Jain ma'am, who are the idols of mountain living, and for youngsters who really aspire to move on early and really take on to such a lovely living. I think their phenomenal experiences from all across would really come handy. So welcome Jain sir and Jain ma'am. Thank you. And Thank you so much. so Dr. Subi will start the conversation, and we will try to keep it a bit informal so that so ma'am, you were telling that you shifted from Kaf Parade, Mumbai in 2011. So let's start with that. जी, we shifted here in June 2011. जी. तो हमारे साथ बेटी थी हमारी, and she had done class 10 from Bombay. Okay. And she had to do +2 from Ranikhet. Okay. और यहाँ आने से पहले हम लोगों ने बहुत सारा होमवर्क किया. We went to Ashok Hall. We went to Saint Mary's Nainital. We went to Balika Vidyalaya Nainital कि अब हम अपनी बेटी को कहाँ पढ़ा सकते हैं. So most of the places were quite disappointing. Disappointing in the sense कि जो जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा हम लोगों को response नहीं मिला. Especially अशोक हॉल में तो उनके पास accommodation है 1000 लोगों की, and there were only 227 children. Okay. तो हमने उनसे पूछा कि अगर आपके पास 1000 बच्चों को रखने की जगह है तो इतने बच्चे कम क्यों हैं आपके पास. उन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई. तो फिर then we decided कि वो हमारे साथ ही रहेंगी. So when we फिर हम लोग जब आ गए यहाँ पर we took her to army school. Okay. तो army school में we liked the army school and we liked the principal very much. Extremely nice person. And she met quite a few students in the school also. उन्होंने कहा आप जाइए स्कूल जाकर दिखाइए. So she went and met some students in the school also. When we came back home, she was not very happy. तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपको स्कूल अच्छा लगा? She said yes, I like the school. पूछा उनसे कि पर आप तो बहुत खुश नहीं लग रही हैं. So she had done class 10 from KV. KV Navy Nagar. अच्छा. KV to Navy Nagar. It's a model school. बहुत अच्छा स्कूल है. Lots of extra curricular activities. बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस स्कूल में. Very nice school. तो उन्होंने कहा कि हम आर्मी स्कूल क्यों जाएं? क्योंकि हम तो आर्मी स्कूल अगर जाएंगे I will always be a second class citizen. क्योंकि हर चीज़ में तो आर्मी वाले बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगी, हमें कौन पूछेगा वहाँ पर. And she is a very good dancer. Okay. And she sings also quite well. और उनको बहुत सारी चीज़ें करने का बहुत शौक है. पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो उन्होंने कहा I would like to join KV. हमने कहा you sure, सोच लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. We were staying very close to KV earlier. जब हम लोग का घर यहाँ बन रहा था. Okay. We were in a So what motivated you from Mumbai to mountains? Like what was that story like to settle down over here? How that decision came through? That we decided I think in 1984. Ooh, Yes, that's where the 5 decades of romance with Ranikhet comes through. They may not have thought about Ranikhet in particular. We did. Yes, that's what. I was posted here. हम लोग 83 से 86 यहाँ पर posted थे. अच्छा सर आप आर्मी में रहे होंगे ना? No, State Bank. I was with State Bank. अच्छा you were posted here. Okay. हम लोग तब बहुत छोटे थे. I was just तो नल में पानी भी नहीं आता, तो वो बैंगी से पानी जो है वो नेचुरल स्रोत जो होते यहाँ के उनसे पानी आता था. वो एक बांस वाली बैंगी होती है, उसमें बाल्टियाँ 2 लटका. So you stayed in the town. We stayed on the top of State Bank of India, जो उसकी पुरानी बिल्डिंग है. Okay. Very close to
both the buildings are adjacent. जो नई वाली बिल्डिंग है, आपने देखा उसके पीछे एक पार्किंग जैसी जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, Yes, yes. और वहाँ एक स्टेट बैंक का बोर्ड भी लगा हुआ. जी. That used to be the original. That wooden building is the State Bank of India's original building, belonging to Plati workshop owners. Okay, 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 okay. और उसके टॉप फ्लोर पे स्टेट बैंक हाउस था. All wooden, beautiful house. बहुत ही सुंदर घर था. हम लोग उस घर में रहे थे. तो वहाँ से Since 86 you were in love with Ranikhet. 83. 83. We came here in 1983. Okay. And we left in 86. Okay. And in 84 I bought my first piece of land here in Ranikhet. Okay. It was then UP. Sorry, I just... Yeah, sir. So, we had decided more or less that when the time comes for me to hang up my boots, I would stay here. Wow. Because we were impressed by the people here, the persons, and we had a lot of friends. We still have them. Natural beauty was also there. That was one of the reasons why we chose this place. But more than that, the invigorating environment here, the weather, the lack of, unnecessary or unusual excitement. You could live at your own pace. That is what attracted us to this. Of course, the people. Okay. And so I bought a largish piece of land then, about 8 nalis. I bought then, which I kept for a very long period. And meanwhile, in 86 when we left, we went to Lucknow and then to London, and never came back to these parts. Okay. And finally, when the time came for me to retire, much before that I quit State Bank of India and I went to another bank. Okay. And That on a also you contract, and when I became 60 years old, I decided to quit working. But that was enough. And उनका थोड़ा समय बाकी था, कॉन्ट्रैक्ट का 2.5 साल बाकी थे. फिर no. But he was in love with Ranikhet, so he just wanted to come over here, come what may. लेकिन बेटे ऐसा जब हम लोग यहाँ से चले गए थे 86 में, and we got foreign posting in 90. Okay. 4 years we were here. 4 years we were in Lucknow, but every year we were coming to Ranikhet. So Wow, from Lucknow to Ranikhet. Every year, every summers, amazing. or sometimes during winters autumn. also, autumn also. हम लोग हर साल. We used to stay in what is that? निराला नगर. No, what is that hotel? मेघदूत. Meghdut. Okay. Meghdut Hotel. We would come and stay there. Yes. But we had a lot of friends here, local. हमने रानीखेत कभी छोड़ा ही नहीं बेटे. Okay. लंदन से जब हम लोग उसमें आए होम ट्रैवल पे, तो पहली चीज थी कि हम लोग रानीखेत जाएंगे. We were in India only for 2 weeks. And that too you came to Ranikhet. We came to Ranikhet. And people from Ranikhet also visited us in London. There is a gentleman called Mr. Belwal, Okay. who lives about 12 kilometers outside of Ranikhet towards Chaubatia. Beyond that, actually, Badgam. So he and his family came to see us. Atul Saraf and his family also came and met us in London. So we remained in touch with Ranikhet, so to say. And so our resolve to settle down in Ranikhet only strengthened. हम लोगों के लिए जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, there was nothing new for us, क्योंकि हम लोग तो हर साल या alternate year पे आ ही रहे थे. अगर हम 2 दिन के लिए भी आते थे रानीखेत, तो हमारे जितने फ्रेंड्स थे सबसे 2-2 मिनट के लिए मिलते जरूर थे. So ऐसा हो गया कि we grew up together. वो हमारी एज के थे जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे. जब हम यहाँ वापस आए तो तब भी वो हमारी एज के थे.
वो किसके बच्चे कब बड़े हुए, कब बच्चों की शादियां हुई, बच्चों के बच्चे, सबके कार्ड आते रहे हम लोग के Lovely. You पास। witness the entire life cycles Yes, of yes. people हमेशा around हम लोग here. Sir mentioned a very important शगुन aspect, like भेजते apart रहे। from the natural beauty for which people generally come over here, the darshan of Himalayas 270 degree. You mentioned about people. उसके विषय में थोड़ा बताइए कि क्या था ऐसा? People, I mean, their simplicity. Um, there was no friction in their lives. Nobody was vying to get ahead of the other one or his neighbor. That was not the case then. Very All these things have simple. come much later. They are now here also, but not in such big measure as you find elsewhere. I mean, you have lived in Delhi, so you will be aware as to how your advancement in life affects your neighbor, not positively. This was not what we had seen here. Okay. And everyone had a high regard for his own dignity. It wasn't that, if you're a lieutenant general or retired now and you're living here, then your friends can't be a shoemaker. One of your friends could be a shoemaker also. Dignity of labor तो अभी Which भी I है saw यहाँ। here. Nowhere else. I mean, I've been to several countries now, about 40 odd countries. My children live abroad and we keep going. But, and we lived in London for so many years. We have not seen this kind of, Bonding. egalitarianism which we saw noticed in Ranikhet at that time. Okay. It's being dismantled now. I mean, a lot of people have come here who have just a little bit of money and they just flaunt it across and they look down upon others. Those things are not to be seen. I will tell you here, there are people still who call themselves my friend, who are, as a human being, possibly better than I am, but in social status, they may not be as good as I am, or, I mean, I would believe so. But they have absolutely no hesitation in calling upon me, meeting me. There is no feeling of, this backwardness or inferiority, which impressed me very much. देखिए आज हम लोगों को we had to travel to हल्द्वानी today. वहाँ पर एक शादी थी जो हम लोग को अटेंड करनी थी and then कल हम लोगों को हल्द्वानी में कुछ ज़रूरी काम थे, कई सारे काफ़ी ज़रूरी काम and 13 we have to be in Delhi on 13. तो that was the plan. फिर एक शादी आ गई कल. शादी किसकी है? जो हमारे 1983 में जिनसे हमारा परिचय हुआ था. उनकी फर्स्ट उनके ग्रैंड चाइल्ड की शादी है. उनका फोन आया, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस बच्चे को आपने पैदा होने से लेके अभी तक देखा है, उसकी शादी में आप 10 मिनट के लिए भी नहीं आए. आप अपना जो भी प्रोग्राम है कैंसिल कर दीजिए, आप नहीं जाएंगे. हम लोगों ने कैंसिल, बहुत ही अर्जेंट काम था हम लोग का, so we had to cancel it. 83. So is it more from the Jain Dampati who are so loving the people out here, or is it mutual? It is reciprocal. I will say mutual also. Okay. क्योंकि आप देखिए हम जब जाते हैं, I used to go to शिव मंदिर regularly, पंचेश्वर महादेव, but because of my leg I can't walk that much now. क्योंकि I used to park my car in front of Thana or sometimes in front of Nainital Bank and used to walk down to the temple. अब मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है, तो हम इतने रेगुलरली नहीं जा पाते. इतनी सारी लड़कियां और लेडीज, कम से कम 25-30 लोग तो पैर छूते ही हैं हमारे, और 25-30 लोगों के पैर हम भी छूते हैं. हमसे जितने बड़े लोग मंदिर में आते हैं उनके पैर हम भी छूते हैं. और ये सब लड़कियां, फिर हमें पूछना पड़ता है कि भाई हम थोड़ा भूल जा रहे हैं. फिर उनको पता है नहीं, हमारे बड़े वाले बेटे की बहू है, ये छोटे वाले की है, ये फलाना है, ये इतने सारे लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है. और जो नई लड़कियां, दे आर क्वाइट टैलेंटेड, और उनमें बहुत काफ़ी सारे लड़कियां जो बाहर से आई हैं, और यहाँ की भी जो हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर वेरी टैलेंटेड. फिर फाइनली हम लोगों ने लोकल लेडीज़ के लिए यहाँ पर एक क्लब स्टार्ट कर दिया, और जितनी लड़कियां जो घर में हमेशा घुसी रहती थी उनको सबको निकाला बाहर कि आप लोग सब आइए बाहर.
और जिसके अंदर जो टैलेंट है वो करके दिखाओ तुम. यू विल नॉट बिलीव इतने सुंदर प्रोग्राम्स करती हैं वो लेडीज जो हैं और नई वाली बहुएं जो हैं और इतनी इज्जत देती हैं हम लोगों को. बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को. हर लड़की में इतना टैलेंट है. So all this friendship which came to you was as a part of your banking relationship or beyond that also? Beyond that also. Banking was those days, of course, not as distant as it is today. There were 3 banks at that time only. Okay. Today, Only 3 banks. today, Okay. today, because of this digital business, people don't come to you. But those days, it had to be a personal interaction to go to a bank. Yes, that did make a शुरुआत difference तो बैंक से ही because, हुई. because that is how people came to know me. And even now, Veena is referred to as manager साहब की बीवी, की wife. ये अभी manager भी हम मैनेजर साहब की वाइफ ही हैं. wife ही है. It is. हमने इनसे कहा आप कभी प्रमोट नहीं हुए. आप यहाँ की ब्रांच के मैनेजर ही रह गए हमेशा. अभी भी लोग यही कहते हैं. अभी अभी हम लोग एक किसी के बच्चे के नामकरण में गए थे तो उन्होंने यही इंट्रोड्यूस करवाया कि मिसेस जैन है मैनेजर साहब की वाइफ, स्टेट बैंक के मैनेजर साहब की वाइफ. तो क्या कुछ बदला है और क्या कुछ वही का वही रहा है रानीखेत में? वो रानीखेत तो पूरा बहुत बदल गया बेटे. अभी तो रानीखेत अच्छा? का अभी पुराने का मैं अभी और थोड़ा और बताना चाहता हूँ. जी. और वो जी, नहीं जी, बदला है. जी. Okay. अभी तक नहीं बदला है. You see, if you came and stayed here, by the way, I had never been to a hill station before I got posted to Ranikhet. I was 31-year-old. Veena, my wife, has been to, she'd been to Dehradun, Nainital, Mussoorie, Dakpathar. My father-in-law was posted in a place where they used to visit these places. They used to visit all these places very frequently. But I had never. And this was my first introduction to a hill station. And what I noticed was the health-giving feature of Ranikhet. You know, if you stay here for any length of time, you add 10 good years to your life. Okay. What a mantra. And you know, it all happens automatically. My personal experience, I have worked for State Bank of India where medical expenditure was limitless. I mean, I could have spent 1 crore of rupees also on my health while working for State Bank of India. But my total expenditure in my entire career with State Bank of India was only 16,000 rupees. Just 16,000 rupees. That also because I once fell while jogging and I hurt myself here in my knee, and I had to go to a hospital. So I was always this way, very fortunate. But having come here, I shifted here in 2011. I was already 60 years old. I've been here now for 12 years, 13 years, or 14 years now it's going to be, or 13 years. And I have never gone to a doctor. I have a great friend in OPL Srivastava. I have been to his house several times. I have had a lot of whiskey at his place. He has All of that attended is both fine. our children's weddings. But I have not consulted him as a doctor. Nor have I mean, only Rajnikant Sinha, because I needed my eyes to be operated on for cataract. And both my eyes he did. Without any hassle. I got my eye operated today and next day I went and played golf. So it is, it's a great place to live in. So was this one of the core considerations? No, it was never. Okay. It was not. I realized it only when I started living here. Okay. The initial period when I was posted here, these thoughts were not there. I was just 31-year-old. I never thought of getting sick or getting medical treatment and things like that. Who thinks of these things? You don't think of retirement the day you join. So that is how. But now I realize that with the benefit of hindsight, that this is the right decision, the best decision we could have So taken. what factors you ascribe for this healing Ranikhet, healing nature of Ranikhet? The life we live here, bete. The life is stress-free. Okay. It's totally stress-free. I couldn't care two hoots if you tomorrow made 2 crore rupees and
I did not. I just couldn't bother. Nor would you. I mean, if you were a local man, as long as you got your 2 pegs of whiskey every evening and a murga whenever you wanted it, or not me, but local people, and but whiskey, yes, I also do. So as long as you are able to, you know, cater to your regular needs, stress-free, absolutely stress-free. I don't need to show my car off. I've got this, what is the Tarantula car? What car is it? XYZ car. No. लेकिन एक चीज यहाँ के लोगों में है बेटे, आपको एक कुर्सी के बाहर कुर्ता और धोती पहन के एक सज्जन बैठे हुए मिलेंगे, एक पुराना मोटा सा चश्मा लगा के, तो पता चलेगा इनकी वर्थ 5,000 करोड़ की है। उस तरह के बहुत, एक नहीं, यहाँ पर काफी लोग हैं उस तरह के रानीखेत में, जिनको आप उनसे 10 बार मिलेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये करोड़पति हैं भी कि नहीं। ऐसे एक नहीं, यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनके जिनके पास बहुत पैसा है। दे डोंट शो ऑफ एट ऑल। आप जाएंगे तो इतने प्रेम से मिलेंगे, इट्स सो डाउन टू अर्थ, बिल्कुल बिछ जाएंगे बिल्कुल आपके आप भगत में। When I got posted here, I was younger than most of the other staff in the branch. I was the head of the branch, but there were others much older. And one gentleman I still remember, Mr. K.L. Shah, who was the cash officer in the branch. And that gentleman had 3 or 5 daughters, I don't know, 3 maybe, 3 daughters, much older. He would come. Whenever he came to our place, he would always touch Veena's feet. और हमको इतनी शर्म आती थी, Who was just 25 or 26 years old then. And this gentleman was more than 50 years then. Look at the simplicity of people here. Okay, one story, a small story I'll tell you. There was Dr. Mathur, who was the superintendent of the local civil hospital. He became a friend. He was much older. He was maybe 50 then. So he said, "अरे भाई जैन साहब, मेरा दूध वाला बहुत तंग कर रहा है." क्या हो गया सर? What is the problem? वो ये तंग कर रहा है, वो पानी वाला दूध लाता है, वो चाय बनाने के लिए बस दूध और जलाता है, उसको रखो, उसी में चाय बन जाती है, दूध मिलाने की ज़रूरत ही नहीं, पानी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। तो उसको मैंने कहा कि भाई तुम इतना पानी वाला दूध क्यों लाते हो? तो उसने कहा साहब मेरे पास एक ही भैंस है, अभी उसमें जितना दूध देती है उसी में मुझे अपना भी गुजारा करना है। तो बोले अच्छा मैं तुम्हें एक और भैंस दिलवा दूँ तो तुम दूध बढ़िया लाओगे? बोला बिल्कुल बढ़िया लाएंगे, फर्स्ट क्लास लाएंगे। तो वो मेरे पास आए थे ये कहने के लिए क्या आप मेरे दूध वाले को एक भैंस का लोन दे सकते हैं और मैं आई स्टैंड गारंटी। तो जब आपको गारंटी देने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूंगा इसको, एक भैंस का लोन दीजिए। वो भैंस भी ले आए। तो उसके 3-4 महीने बाद डॉक्टर माथुर से फिर से मुलाकात हुई, उनके घर गया हम लोग चाय पीने। तो हमने कहा डॉक्टर साहब अब तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया होगा, अब तो आपका दूध वाले को एक भैंस भी और हो गई। तो कहने का अरे भाई उसका दूध तो पहले से भी खराब हो गया। बोले पहले तो कभी चाय के लिए थोड़ा सा हमको दूध मिलाना पड़ता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलाना पड़ता, आप सीधे रखो और पत्ती डाल दो, ऐसा दूध आता है। क्या हो गया? आपने उससे कहा नहीं? कहने के मैंने उससे कहा, कहने लगा साहब सारा दूध आपको ही दे देंगे तो भैंस का लोन कहाँ से चुकाएंगे? दूध सारा आपको ला के दे देंगे तो लोन कहाँ से चुकाएंगे। हमारे यहाँ भी एक दूध वाले आते थे हमारे स्टेट बैंक हाउस में, तो हमने उनको कई बार कहा दूध अच्छा नहीं आ रहा है। तो एक दिन हमने उनसे कहा कि भाई आप बहुत खराब दूध ला रहे हैं, हमें लगता है हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि आप तो दूध से ज्यादा पानी मिलाते हैं। उसने कहा पानी तो है दूध में, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी, पानी तो है दूध में, लेकिन पानी उतना ही है जितना हमने पहले दिन मिलाया था। लवली लवली लवली। तो सर ने तो ये बताया कि रानीखेत में क्या नहीं बदला है, यहाँ की हीलिंग वो नहीं बदली है क्योंकि अभी भी एटमॉस्फेयर अभी भी क्लियर है। हाँ हमको बहुत सारे जलने वाले लोग जो बाहर रहते हैं वो बताते हैं कि आपके यहाँ वो कौन सा होता है AQI बहुत ज़्यादा है और फलाना वहाँ पे हेज़ है और ये वो।
मैंने कहा यार वो आप वहीं से बात करते रहो हम यहाँ जी रहे हैं, हमें मालूम है कि आपको रोज जो है सवेरे उठते ही फिर झुकना पड़ता है, हमें नहीं करना पड़ता. तो actually yes, the quality of life is much better here. It is much more enriching also. You see, what gives you strength in smaller places is recognition of you by your neighbors. Okay. अरे दिल्ली में मेरे जैसे तो 2 लाख 4 करोड़ लोग या 2 करोड़ या 50,000 पता नहीं जितने भी लाख लोग होंगे, मेरे जैसे तो तमाम घूम रहे हैं. वो तो who bothers, वहाँ तो अंबानी को नहीं कोई पूछता, तो CS जैन को कौन पूछेगा. यहाँ तो ये है कि CS जैन अगर सड़क पे निकल जाए तो 4 आदमी कम से कम एक्नॉलेज तो करते हैं, यार ये भी एक आदमी है, नमस्ते सर कैसे हैं. ये all this is missing in big cities. लेकिन जो पुराने हम लोग के फ्रेंड्स थे जो तब बने थे उस समय में आज भी वो हम लोग के फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनका जो बर्ताव है वो बिल्कुल नहीं बदला. बिल्कुल बदला. ना हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारा बर्ताव उनके लिए ना बिल्कुल ना बदले. Some of them have become really rich, very rich. बहुत बहुत पैसे वाले. बहुत पैसे. और उसके बाद भी वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो यही और पीपल इतने क्वालिटी जो आप बता रहे प्यार हैं. से बुलाते हैं, जी. इतना मना के बुलाते हैं. और आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हंसते रहते हैं, कहते हैं आपका एक पैर यहाँ रहता है एक पैर वहाँ. हमने कहा देखिए आप लोग सब हमारे नए फ्रेंड्स हैं जो हमारे यहाँ शिफ्ट होने के बाद बने हैं. और वो जो लोकल लोग हैं बाजार में हर दूसरी दुकान के इंसान को हम लोग जानते हैं, वो हमारे 40 साल पुराने फ्रेंड्स हैं, उनको हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते. कभी कभी ऐसा भी होता है, आज किसी की माँ की 13वीं है, कल किसी के बच्चे का नामकरण है, आज किसी की बेटी का महिला संगीत है, चाहे हम 10 मिनट के लिए जाएं, लेकिन हम जाते जरूर हैं. पिछली बार ये जिसके नामकरण की बात हम बता रहे हैं, आई वॉज नॉट वेल, ये उनको जुकाम हुआ था. फिर हमने इनसे पूछा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम जाए कि नहीं जाए. उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आपसे इतनी बार कहा है और आप हमेशा गई हैं वहाँ. हम लोग साथ साथ गए, वो कार में बैठे रहे इतनी देर, और फिर हम उनके यहाँ होकर आ गए, लेकिन हम जाते जरूर हैं. सर ने बताया कि रानीखेत उनका पहला हिल स्टेशन था और शायद उसी के साथ वो बंद गए. आप बहुत सारे हिल स्टेशंस आपने देखे हैं, तो रानीखेत में क्या विशिष्टता आपको नजर आई बाकियों के अपेक्षा? रानीखेत में उस समय जो हमें जो सबसे अच्छी चीज लगी थी वो ये थी कि इट वॉज नॉट अ वेरी बिग टूरिस्ट प्लेस. ओके. हमारे हिसाब से कि नैनीताल में अगर आप जाइए तो इट इज वेरी मच कॉमर्शलाइज्ड. आप उसकी हर चीज में आपको दिया गएगा कि उनका एक ही मोटो है कि हाउ टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट. जो चीज आपको रानीखेत में नहीं मिलेगी. अब वो धीरे धीरे बहुत स्लो पेस से ये लोग भी सीख रहे हैं कि भाई अगर हमको बहुत सारा धन कमाना है तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा नैनीताल को फॉलो करना पड़ेगा. बट इट स्टिल इज वेरी काम एंड क्वाइट एंड वेरी नाइस प्लेस. अभी भी देखिए आपको जितने टूरिस्ट नैनीताल में दिखाई देते हैं उसके आई थिंक 1/4 रानीखेत में. अब तो इतने सारे होटल बन गए हैं बेटे. हम लोग जब थे तो बाजार में 50 दुकानें होंगी शायद, और सब लकड़ी के डिब्बे वाली. और 5-5:30 बजे आप बाजार में जाइए, पिन ड्रॉप साइलेंस, और एक कागज का टुकड़ा आपको सड़क पे दिखाई नहीं देगा. इट यूज्ड टू बी सो क्लीन. लगता था कि रोज किसी ने धो दिया है सड़क को, इतना साफ था रानीखेत. एंड देयर वाज ओनली वन टैक्सी. एक टैक्सी थी जो मेघदूत होटल है मॉल रोड पे, उसमें उसी में एक नीचे एक छोटी वेजिटेबल वाले की शॉप है. दैट शॉप बिलोंग्स टू अ मुस्लिम गर्ल. उसका पता नहीं असली नाम आपको पता है, पप्पू हम लोग कहते थे उसको. उसकी एक जीप थी. दैट वाज द ओनली टैक्सी रानीखेत है, और वो खुद चलाती थी अपनी गाड़ी. तो और अब आप देखिए रानीखेत में कम से कम 4-5 हजार गाड़ियां तो होंगी, टैक्सी तो इतनी होंगी, लेकिन 1000 से कम नहीं. और चौबटिया से टीचर्स देखिए आप, दे यूज्ड टू वॉक अप टू GGIC गर्ल्स स्कूल. आपको शायद मालूम है आपको कहाँ पर है? सोमनाथ ग्राउंड के नीचे 1 किलोमीटर फ्रॉम सोमनाथ ग्राउंड डाउन. People walking from Chowbatiya. Okay. There was only one bus. एक बस सुबह आती थी. So there was such a walking culture that time. हाँ, everybody used to walk. Yes, you would not encounter people who are fat or obese. He used to walk every day from State Bank House to Ranikhet Club to play tennis. Okay. Every single day.
He used to walk from there. So quality Walk of life back तो also. जो मैं बता रहा हूँ तो आपको, 8 किलोमीटर तो चलना होता ही था इनका, 4 किलोमीटर जाना 4 आना. 8 kilometers in mountains. Terrific. Every day he used to walk. जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो मैं बात कर रहा था वो मैं यही बताना चाह रहा था कि आई प्ले गोल्फ हियर. लखनऊ में नहीं खेल सकता मैं जी. अगर मैं लखनऊ में बसता जाके तो मैं लखनऊ के गोल्फ कोर्स के मेंबरशिप लेने के लिए 15 लाख रुपए ला के लगाओ तो मेंबरशिप अगर फिर भी वेटिंग पीरियड होगा कितना. आई प्ले गोल्फ हियर. और अपने घर से आप 2 घंटे पहले निकलिए. और अपन आज यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पे ग्रीन लाइट है, यहाँ पर जाम है, यहाँ पे कहीं वो धरना दिया हुआ है, यहाँ पे जुलूस निकल रहा है, तो आप 2 घंटे में पहुँचते हैं और 2 घंटे में वापस आते हैं. यहाँ it takes him 10 minutes to go to golf course here. So people, environment, stress-free, privileges, people recognize you. But in bottom line, sir, आपने कहा कि Recognition बहुत जरूरी है. recognition is very important, and after you superannuate, तब उसके बाद में No, जो even when I mean, you see, you don't feel that you have ceased to exist. okay. See, in Bombay, your next door neighbor doesn't know whether you're dead or alive. Here, people are worried. If your light is not on today, people are worried. You could get a phone call. Veena sends messages in the morning. If for 2 days or 1 day she misses that message, there are phone calls. अरे आपको क्या बात है? 2 दिन हम मैसेज नहीं भेजते हैं. तबीयत खराब है, क्या है, क्या बात है? So caring communities around. Yes. Okay. राजदीप वाली जो सीमा है उसका सबसे नहीं, पहले फोन आता किसका है, आंटी क्यों? आप कहाँ हैं? राजदीप सीमा सभी राजदीप सभी सीमा क्यों? सभी सभी. See, occasionally we do travel. So suppose, I mean, last year at this time we were in Australia. Okay. So कुछ travel करने में नहीं भेज पाए होंगे messages, तो कितने messages Are you not well? Are you Where not are well? you? What has happened? And if you don't respond to those, then there are phone How calls. is uncle? Is he not well? क्या हो गया आपका मैसेज क्यों नहीं There आ are रहे? phone calls asking for your good well-being. So is it with the local community or even the people who have settled out here, the closeness subsists? मतलब जो बाहर से आके यहाँ भी के रुके लोग भी कह सकते हैं, पर लोकल वाले लोगों तो ज्यादा फौरन है. बहुत ज्यादा हो जाते हैं. जो लोग बाहर से आके यहाँ पे बसे हैं, it will take them some more years to, to come to that Rani Khet culture. come to that हम because sorry. जी, because they it's a matter of lifetime habit. The people are coming here at an advanced stage. They can't change themselves so much. I'm not saying that they are not good. So but what happened with you that you were so like hunky dory, you were so like befriending everyone? Because being a branch manager in a small town like Rani Khet, it's quite a elevated position. So, That was हम लोग तो कितने सारी इनकी पार्टीज में चीफ गेस्ट होते थे. I have आर्मी been के the chief उसमें guest at the army mess. many times. I have been invited to a party where the chief of army staff was also invited, so we have also gone and joined the party. So ऐसा नहीं है. And who used to come to my house for dinner? The commandant here and the brigade commander. दोनों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से. Brigadier Issa was here. Brigadier Talagi was in Chagotia. We have gone to their home several times. They have come to our house. So it all happened organically और उसके लिए कुछ effort जैसे नहीं, efforts were made by us. Okay. नहीं, हम Not लोगों ने that अपनी way. तरफ से. Not that way. I mean, we did not want to cultivate people, for social advancement. No. We always made sure that we did not commit gustaki in somebody's shan. You see, you should not hurt other people's ego जी जी. unnecessarily. Where is the need? You can't give them anything. You can't take anything from them either. But at least leave them happy. Once you have interacted with them, let them be happy. Let them remember you for your good behavior, your manners. So that is what Veena also, I told you, people much older than she is would touch her feet. But that didn't mean that she would, not give them respect and honor. No. They would come and sit in our home. They would be fed. They would be given all attention. जब हम लोग मंदिर जाते हैं हम यहाँ पर, तो मंदिर जब जाते हैं तो कुछ प्रसाद वगैरह ले जाते हैं जो पहले वहाँ रख देते हैं जाके. फिर उसके बाद से जहाँ हम बैठने के लिए आते हैं, वहाँ बैठने आने के लिए हमें 4-5 मिनट लग जाता है
क्योंकि जितने लोग दिखते जाते हैं सबके पैर छूते हुए जाओ, सबको यहाँ पे ग्रीट करने का कल्चर जो है नमस्ते वाला बहुत कम है, पैर छूने वाला बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ओके ओके। तो वो जितने जितने लोग हमको देखते हैं, हमें जो लगता है कि हमसे बड़े हैं या जो पुराने लोग हैं, तो सबके पैर छूते हुए आप जाइए, फिर जाके पीछे बैठ जाइए। वो वाला कल्चर अभी बहुत है यहाँ अभी पर। भी है। और आप देखिए जो फंक्शंस होते हैं मंदिर में, 150-200 लेडीज तो होती हैं, जैसे होली का फंक्शन होता है, जन्माष्टमी, इस तरह का फंक्शन। और जो गांव की लेडीज हैं, बिल्कुल बहुत बूढ़ी लेडीज, और बिल्कुल ऐसे फटे फटे हाथ हैं, क्योंकि खेत वगैरह में काम करती हैं, वो मोटे मोटे नाखून हैं, क्या बढ़िया हारमोनियम बजाती हैं। आर यू सिंग एनीथिंग, आप कुछ भी गा आप दीजिए, कुछ गाइए, वो उसको बजा देंगी। जी, जी, जी। अच्छा, आप अगर उनको जल्दी जाना है तो वो बराबर वाले को हारमोनियम दे देंगी, तो वो बजाने लगेंगी उसको। ये नहीं कि वो मुझे नहीं आता, मुझे मत दो। 20 लोग होते हैं ढोलक बजाने वाले, तुम थक गई तो लो मैं बजा देती हूँ मैं। एंड आपको मैं बताऊं कि जो डांस करने वाली लेडीज होती हैं, उनको कहना पड़ता है भाई 2-4 बैठ जाइए, जिससे बाकी लोगों को मौका मिल जाए, क्योंकि 10 लोग एक साथ डांस कर रहे हैं और जगह बहुत कम है। इतना एंथुजियाज्म है लोगों में, एंड एब्सोल्युटली नो इनहिबिशन। वही मैं कहता हूँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं। इनहिबिशन तो ये प्रकृति के प्रसार के कारण है या समाज अरे का? मेहनत की वजह से। मेहनत। आप लेडीज को देखिए, मेहनत भी है, एक दूसरे के प्रति लगाव भी है, एक दूसरे की इज्जत करना, Yes. और किसी को छोटा नहीं समझना। बहुत बड़ी एक बात है। लोहार की एक वो आती है बहू, इतना बढ़िया डांस करती है। एक उसका बहुत फेवरेट गाना जब वो आती है तो हम वी मेक श्योर कि वो वाला भजन हम लोग जरूर गाएं। एक हनुमान जी का भजन है, क्योंकि वो उसको सुनते ही वो डांस करने लगती है। तो इस तरह की ख्याल रखते हैं लोग। हाँ, This is, छोटी छोटी चीजों का ख्याल हम लोग बहुत रखते हैं। So June 2011 we shifted here. Okay. We stayed in a guest house for 15 days. जहाँ पे कुकिंग की फैसिलिटी नहीं थी। एनेक्सी था स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का ही एनेक्स था। उस गेस्ट हाउस में there were so many occasions when we had food sent to us by more than one person. हमें वापस भेजना पड़ा, और बहुत ये हम लोगों हाथ ने एक जोड़ दिन भी के नहीं पकाया, क्योंकि कि पका ही नहीं हमारे पास सकते थे। ऑलरेडी खाना है, But so और many उसमें people फ्रिज sent us food day after day after day till we shifted to. जैसे ही लोगों को पता चला कि हम लोग शिफ्ट हुए यहाँ पर, तो वो टिफिन आ रहा है, फिर मैं हाथ जोड़ के हमको कि हमारे पास फ्रिज नहीं है और खाना ऑलरेडी है, प्लीज वेस्ट जाएगा, इतने प्यार से बनाया हुआ खराब हो जाएगा। So one very probing question: was it the people, was it the nature, which pulled you primarily? बोथ। There is no difference. There is no difference. People and नेचर nature थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं, नेचर से हम लोगों को बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत लगाव है। पर लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संबंध भी बनाए हम लोगों ने। और हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि अगर हम किसी से संबंध बनाए तो वो बना रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीजें होती हैं जो हमें बहुत बुरी लगती हैं या दुख होता है जिनसे, लेकिन हम उनको अपने संबंधों के बीच में कभी नहीं That लाते। calls for a little sacrifice on your part. To maintain relationships, you have to. अपने परिवार में भी हम ऐसे ही करते हैं, बिकॉज ही इज एल्डेस्ट इन द फैमिली। मुझसे तो बहुत लोग, मेरे देवर भी बड़े थे, इनकी सिस्टर भी बड़ी है, लेकिन क्योंकि पद में हम सबसे बड़े हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि सबको बांध के और जोड़ के लेके चलें। थोड़ा बहुत ऊंचा, कभी कभी इनको गुस्सा आ जाता है भाई बहनों के ऊपर, किसी के ऊपर, तो इनको शांत हम ही करते हैं कि आप सबसे बड़े हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, छोटे लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती, वो हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। जब ये बैंक में ब्रांच मैनेजर थे, तो हमने आने के फौरन बाद से हम जब भी हमारे यहाँ कुछ भी होता था, छोटा सा भी कोई ओकेजन, तो पूरे ब्रांच के लोगों के साथ ही हम लोग चाय पीते थे। अगर वो कोई स्पेशल ओकेजन है और हम अगर चाय समोसा खा रहे हैं, तो देयर विल बी 40-50 समोसास वी विल ऑर्डर, सबके लिए चाय और समोसा। I had a big staff. Those were the days when computerization was not there. So I had more than 50 staff in the branch. 11 officers. 26 or 28 clerical staff. And then we had 16 or so messengers, including guards. We had round the clock guard in the state bank. Even now they have. होली हम लोग हमेशा साथ साथ मनाते थे, पूरा स्टाफ, ऐसे ही पूरा होता था. सब लोग आएंगे तभी हम लोग होली So मनाएंगे। this is one posting which you cherish the most. This is the only time I have ever gone to a branch.
In State Bank of India, in my entire career, I quit State Bank when I had already become a general manager for many years, and then I left State Bank. But I went to only one. I came only to one branch as an in charge, or in any other posting as a probationer. I went to 4 or 5 branches, and in London also I went to a branch. You can say I was head of credit. But those are not branches, and as a probationer, postings are not branch postings. Phenomenal. So this is the only branch I came to ever. So I have no other experience to compare. But yes, I've had several field postings, and in all my field postings I have been extremely successful. Extremely successful. One small story, nothing to relate. So they were after Aniket's posting, all other field postings. Yes. Okay. Yes. I was a junior man when I came here. As a regional manager, I went to Bhopal, and so that's a very sweet story there. I had 32 branches working under me, and out of which about 11 branches were loss making. Okay. And the maximum loss in the entire circle was loss making branch was one of my branches, Jain main branch. So I still remember the number. I think it was 75 lakh loss they had incurred. So my general manager called me one day and he said, I want to visit your Jain branch, but we will not tell them. Anyway, we went there. He was 2 steps ahead of me. General manager, then there is a deputy general manager, then I was a regional manager. Anyway, so I was in awe of him anyway. But I knew him, I had that advantage. So we went and visited Jain branch around lunchtime. It was bank's own building. Apart from the chief manager of that branch, there was no other staff in the branch. Because it was lunchtime, everyone had gone to lunch. So we waited. Lunch was half an hour, 45 minutes, 1 hour. Nobody came to the counters. So Mr. Iyer was in charge of the branch. I asked him, "Kya baat hai?" And he had met me for the first time because I had just gone there. So he said, "वो ऊपर कैंटीन है ना, वो कभी-कभी वहाँ पर रहते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप घबराइए मत." He didn't want to create a fuss. लेकिन उनको ये मालूम थोड़ी था कि आप रीजनल. So we went there. He knew Bhashya. So we went upstairs and we found that people were still in the canteen, the staff canteen. And they didn't know me. And many of them would not even know the general manager because the general manager was too seniors. So we just observed. And there was a table tennis table there where some people were playing table tennis. Mind you, working day. So I was with a tie and suit and GM also. And so I went to the table tennis table and I said, "Bhai, you know Mr. Bhashya? He is general manager from Bhopal. So उन्होंने बंद कर दिया खेलना. I am so and so. I am your regional manager." So they said, "Why are you people still here? You know your branch is a loss-making branch, and customers will be waiting down, and you are still here." So they were a little sheepish. Then suddenly an idea came to me. I said, "Okay, who's your champion, local champion in table tennis here?" So one Mr. Madhav Mantri was brought up here. Madhav Mantri was one of the clerks, and he was also the local secretary of the union. I said, "Mr. Mantri, I challenge you to a game of table tennis. If I beat you, your branch has to show a profit next year." Wow. It was July. The year starts in April. So, in front of the general manager, with a suit and tie, I played with him and I beat him. Har gaya. Next year, the same set of people, 1 crore 17 lakhs profit. Same set of people, same branch, same people. And
next year I got promoted as a general manager and I went to, got posted to Bangalore. But that is another story. But in Bhopal, this was one of the sweetest memories I have of my career in State Bank. Like this. Table tennis खेल के यार lost the profit आ गया. They recovered. How did they make that profit? They recovered a lost asset of 76 lakhs by selling property. उसकी property बेच के 76 लाख रुपए उन्होंने जमा किए और अगले साल 1,17 लाख का profit. So contrasting to this Bhopal branch experience, what you just mentioned, any such experience from the Ranikhet branch from a banking perspective? Yes, but that is not a good experience in the sense that Initially you had lots of initially I had a lot of problems because I got posted from Lucknow directly Okay. to Ranikhet. There were a lot of aspirants to this place. A lot of people wanted to come. Okay. And my immediate boss was in Bareilly. Okay. And I was posted from Lucknow, which was the local head office. So I was resented by people in Bareilly. They thought I'd been imposed, and I was not even the oldest. I was the youngest. I was not even the senior most, because I was a Scale 1 officer, officiating as Scale 2, whereas there were several Scale 2 officers there. So all this had caused friction, and it took me some months to iron it out. I had to be very careful in how I spoke with people, how I interacted with them. I used to lose my temper very quickly in those days, and there was one instance where I actually slapped one of my staff in the banking hall. Thapad mara maine usko. And those days were days of very strong unionism. So one of the local board members, one Mr. This fellow, union leader, who was on the local board of State Bank of India, he came to the branch, and it was quite a furore. Obviously, these were not things which were normally done, but I had that kind of. You were driven to, you had to. It was because this man was misbehaving with customers, so I could not take that. But it blew up into a big storm. Anyway, that blew off, and